Hello, everyone. A very logical day to all of you. And this is the last day of the month. And as I said yesterday, that you have to do all the pending work, right? You need to complete it. And yes, you have to do it, right? So I'm repeating it. And of course, and I'll be giving you a small task at the end of this today. So let's see what we have in store for us. 30th June, the first editorial of the Indian Express. Changing the game. Let's see which game they are playing and what are the changes there. So the reading part here contains the Union Cabinet's decision to set up an NRF, an apex body to promote, fund, and mentor the scientific research in higher education institutions across the country is immensely welcome. So here it comes. Sorry. So the absence of a congenial ecosystem has meant that Indian scientists today work in silos, and the research output of only a few select institutes matches up to the global standards. The NRF could be a game changer. It aims to impact Indian universities, colleges, research institutions, and R&D laboratories. Colleges and most universities are today seen as centers of knowledge dissemination. We'll be understanding this dissemination word according to यूनिवर्सिटीज तो सोचो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं नॉलेज को डिसेमिनेट करती हैं इसका मतलब उसे स्प्रेड करती हैं so while specialized institutions are tasked with undertaking research the NEP 2020 envisions a change in this state of affairs by making all higher education institutions teaching as well as research intensive. So we get 2 points here. I'm not marking it today, so you need to keep those 2 points in your mind. First, this task, whatever they have started, this decision is welcome. First point. Second, this is intensive research or research intensive. This requires, now what does it require? Addressing a dissonance. Dissonance का मतलब होता है disagreement. उस disagreement को address करना मतलब उसे face करना, वो जो challenge है उसे सही करना. You need to understand or get the solution for it. So this requires addressing a dissonance. On the one hand, elite institutions nurture talents who go on to occupy top positions in industry and academia across the world. On the other hand, colleges, universities, and polytechnics wage a grim struggle for expertise, funds, and infrastructure. Colleges में ये problem होती है और जो talents होते हैं, they go up climbing the ladder. Now, by becoming a bridge between the two and enabling the top varsities to handhold the less well-heeled institutions, NRF could help accomplish one of the NEP's more difficult tasks. Right? So what we get here, one, this decision is immensely welcome. Second, they need to address a dissonance. What is the dissonance given in the last part of the paragraph? On the one hand, on the other hand करके. तो डिसोनेंस किसके बीच में टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं टैलेंट्स जो वहां पे पढ़ते हैं और दूसरी बात यही इंस्टीट्यूट्स हैं विच आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन देयर फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज राइट सो we get a link between welcoming, between addressing a dissonance, and you need to bridge or you need to become a bridge between these two problems. That is the dissonance. Then the proposed agency intends to forge collaboration between the industry and academia. Industry, academy, right? इन दोनों के बीच में इन्हें क्या करना है? Collaboration करना है. तो collaboration का meaning आ जाता है. Co means together, labor means work. So they need to work together. They need to collaborate. So government departments, research institutions, such partnerships have resulted in some of the groundbreaking developments in the global knowledge economy. In India, however, scientists and even the top institutes face bureaucratic hurdles in raising money. The NRF could help catalyze change. NRF वही था first decision जो कि immensely welcome था. Last part of the first paragraph was stating that see they are it's a grim position for them for their funds and all, right? Uska funds tha, infrastructure tha, and expertise tha. So we remember this much, and they have to bridge the gap. So NRF has to do it. Now the same thing again. NRF could help catalyze change. तो मीनिंग क्या हुआ ये चेंजेस जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकती है एनआरएफ
but it will have its task out. The agency intends to raise 50% of its next 5 years budget of rupees 50,000 crore from the private sector. Now that might not be easy, मतलब उनके पास ऑलरेडी एक चैलेंज है, पैसा तो चाहिए, ये तो है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? व्हाट डू दे इंटेंड? 50% प्राइवेट सेक्टर से. प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी पैंडेमिक के बाद इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा. अगर इतना ग्रोथ नहीं है तो हाउ इज इट गोइंग टू गिव यू 50,000 crore or rather 25,000 crore? So that might not be easy in an economy that is just about recovered from the blows of the COVID pandemic. The NRS success in democratizing the knowledge production ecosystem could hinge a lot on the incentives it offers to its private partners. क्या क्या वो बदले में देना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा. तो वो इंसेंटिव्स होते हैं what they will give to their private partners, and it could hinge. तो hinge का मीनिंग हमें आ जाता है, hinge joints होते हैं, राइट. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जहां पे हम पूरा गोल घुमा सकते हैं, और ये हिंज जॉइंट्स होते हैं जहां पे सिर्फ आधा वो डायरेक्शन हो सकता है. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. सो इट डिपेंड्स, दैट इज हिंजिंग ऑन समथिंग वुड बी डिपेंडिंग ऑन. Now, from making the country's manufacturing sector competitive to cleaning rivers, from weatherproofing agriculture to designing smart cities, and from developing antidotes to emerging diseases to nurturing the cutting edge digital innovations, the demands before Indian science are myriad. From to करके वो myriad word use करता है. We can understand the meaning of the word myriad is many things, multiple things taken together would be myriad. In underlining the need to make research sensitive to the concerns of the rural areas, the NRF project seems alive to these imperatives. Imperatives is something that they have to do. Right? It is modeled on the National Science Foundation in the US, which has been a research enabler in areas as diverse as oceanography, space research, material sciences, computerization, and AI. Right? Now, the director of the independent federal agency is appointed by the US president and confirmed by the Senate. But it also draws on 50,000 independent experts every year to assess the project it supports. So there are experts also. Now, see, they are working on the same in the same style as the US same department is working, right? तो उसका एक comparison नहीं है, पर उसका mention इसलिए है कि आप देखो यूएस किस तरीके से काम कर रहा है, तो वैसा ही काम अभी एनआरएफ भी करना चाहता है on multiple areas. But it also draws on this much. Now, the top positions in the NRF board are reserved for members of the government, including the PM and the ministers of science, technology, and education. Fine. जैसे इसमें था जो डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी अपॉइंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट था, वैसे यहाँ पर भी वो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन. The dominant presence of the government is perhaps unavoidable given the significance it has attached to the agency. जरूरी है, सही है, ठीक भी है कि गवर्नमेंट के जो टॉप लोग हैं, दे आर द बिग गन्स, बिग शॉट्स, they should be there in this agency because it is very important to them. But while drawing up the fine print of the NRF bill likely to be introduced in Parliament's monsoon session, government should take care to ensure the institution's autonomy. इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को इतनी लिबर्टी, थोड़ा सा फ्रीडम इतना होना चाहिए कि वो उसके ऊपर इम्पोज ना करे चीजें. गवर्नमेंट है उसके हाथ में, मतलब गवर्नमेंट हैज टू कीप एन आई ऑन इट, सो इट इज देयर इन द मेजर पोजीशन, बट देन लेट दिस इंस्टीट्यूट वर्क as it feels right, as it seems right. So we have that NRF it has been decided. It is good. It is welcome according to the author. It is necessary also because of this gap between the two, between the expertise and the funds, and all funds are required. एक पॉइंट ये थी. एक और पॉइंट क्या थी कि फंड्स रिक्वायर्ड है, आएंगे कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर से. प्राइवेट सेक्टर को इन्हें कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा. दैट वाज फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ इट सेज दैट सी दिस इज रिक्वायर्ड, this is good because as US has also done this, right? Because US has done this, नहीं, यूएस ने ऐसा किया है, इंडिया ने भी ऐसा डिसीजन लिया है. इसके भी हेड पे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स रहेंगे. एंड one thing that the author says is that it should be seen that they do not impose themselves on the institution and give it some space to work on its own, and there would be experts and there would be myriad fields to be covered. In सब में research होगी, so it is a good thing according to the science research. Right?
So a positive note from the point of view of the author. Let us see what the main idea is. National Research Foundation called could democratize science research. It must be made financially sound and autonomous. तीनों चीजें author ने बोल दी है, democratize, autonomous, financially sound. Vocabulary देख लेते हैं, हम सिर्फ words समझ रहे हैं. I'm not writing anything today. You need to note down the words in the notebook and I'll be giving you the root word here. जिस जिसका रूट वर्ड होगा वो देखते जाना. आई बी काउंटिंग इट. पहले तो ग्रिम है, ग्रिम का रूट वर्ड नहीं है, ग्रिम का मीनिंग सीरियस है. मीनिंग लिख लो. ठीक है. अब नर्चर का मतलब होता है फॉस्टर करना, उन्हें पालना. राइट. सो नर्चरिंग गुड हैबिट्स हो सकते हैं, नर्चरिंग द चिल्ड्रन हो सकता है, नर्चर योर सेल्फ हो सकता है, योर हॉबीज हो सकता है, कुछ भी मतलब देखभाल करना, फॉस्टर करना. हियर व्हाट यू हैव टू राइट इज TURE or URE as a suffix. Right. You can write it down. Varsities are multiplicities, varied nature, ये हम समझ सकते हैं. Congenial में CON as a prefix आप लिख सकते हो. So CON means coming together or joining. That is the second word that I'm giving you. Congenial का meaning हो जाएगा pleasant, sociable. And we have done this word, I remember. Envisions में again you have a third prefix that I'm giving you, EN. So you can write many words with EN. Encourage, ensure, encircle, आप लिख सकते हो ये. ठीक है. अब यहां पर है envision. Envision में एक रूट वर्ड और आता है, so that makes four. The fourth word that I'm giving you. So viz means to see. So VIS, viz means to see. I'm repeating. So visual, vision, envision, visible, invisible, बहुत सारे वर्ड्स हैं. जितने तुम्हें याद रहे वो लिख लो, जितने नहीं सोच सोच के लिखना. Dissonance is something that is a disagreement. Now if it is a disagreement, now I have another word for you, DIS as a prefix. DIS means a negative connotation usually when it is used as a prefix. Another root word that I can give you here now is the sixth one, that is son. SON. Son would be related to sound. ठीक है. तो assonance, consonant, dissonance कर सकते हैं हम. ठीक है. पॉलिटेक्निक्स, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड. अभी आज मीनिंग नहीं दी है मैंने आज, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके हम प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स निकाल सकते हैं. और वैसे भी हमारे पास अभी जून के महीने में वी डिड दिस ओनली. राइट. विल स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम टुमारो. सो पॉलिटेक्निक्स, पॉली एज अ प्रीफिक्स, यू कैन कम अप विथ मेनी वर्ड्स. ठीक है. सिंपल पॉली के साथ कर लो. पॉली मीन्स मेनी. Autonomous में again you have a root prefix, you can say auto. तो ऑटोमेट, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, कुछ भी कर लो. जितने वर्ड्स आते हैं तुम्हें समझ में वो कर लो ना. आई स्टॉप्ड काउंटिंग, आई थिंक सो. तो एक पॉली का था और एक ऑटो का था. ऑटोनॉमस में नॉम वर्ड यूज कर सकते हो. नॉम मीन्स नेम. राइट. नॉमिनल, नॉमिनेट, नॉमिनेशन, नॉमिनी. ठीक है. बहुत नॉम का मतलब होता है नाम मात्र का. Nominal amount मतलब नाम मात्रा. So you have I think so 8 or 9. I missed the counting. Collaboration में we have prefix that is CO. So this is the ninth one that I'm giving you. So CO means again combining or coming together. And labor word हमने डिस्कस किया था, पर labor हो गया 10th हमारा. काउंटिंग मिस हो गई है तो कम तो नहीं होगी, 10 का 11 होगा पॉसिबल. मे बी आई मिस्ड, पर अब आप लिखना. लेबर इज टू वर्क. Dissemination में we have one word again, that is sem, and sem means seed. SEN, sem means seed. राइट. तो सीड्स जैसे स्प्रेड होते हैं, अब उस हिसाब से देखो तो सेमिनल हो जाएगा, सेमिनार हो जाएगा, डिसेमिनेट हो जाएगा. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में तुम्हारे पास वर्ड है क्रेट एज अ रूट वर्ड. क्रेट या क्रेसी का मतलब होता है रूल या रूलर. राइट. सो यू कैन राइट इट डाउन, CRAT एंड CRACY. ठीक. हर्डल्स पता है तुम्हें, हर्डल रेस कभी देखी होगी. तो हर्डल्स आर ऑब्स्ट्रक्शंस. और हर्डल हमने शायद 2 दिन पहले डिस्कशन किया था. वी गॉट दिस वर्ड इन द एडिटोरियल ओनली, एंड दैट हर्डल वाज अ वर्ड, या चाइना हर्डल. इफ यू रिमेम्बर 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये वाला टॉपिक था, चाइना हर्डल, जहां पर वो टेररिस्ट की बात हो रही थी. ठीक है. तो उसने एक कुछ दे यूज 2 टर्म्स नो, उसे एक ऑन टेक्निकल होल्ड पे रखा था.
Yes, I remember that. And if not, if you do not remember, kindly go back and see it. कैटालाइज हमने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा ये वर्ड कैटालाइज कैटालिसिस का मतलब होता है जो एक रिएक्शन को बहुत जल्दी करता है फैसिलिटेट करता है सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैटालाइज विल बी टू फैसिलिटेट पैंडेमिक इज समथिंग दैट यू हैव बीन लिसनिंग टू दिस वर्ड फॉर द लास्ट 3 years ठीक है लेकिन इसमें हमारे पास एक वर्ड आ जाता है पैन और पैन का मतलब होता है ऑल ओवर तो पैनऑप्टिक विजन हो सकता है पैंडेमिक इसीलिए पूरी दुनिया में था इसलिए पैंडेमिक किसी एक जगह पे होता तो एपिडेमिक हो जाता वो ठीक है ये पर हर क्लाइमेट में हर कहीं पे हर शहर में ये था सो दैट वाज पैंडेमिक राइट एवरीवेयर सो पैन से हमारे पास एक और वर्ड आ सकता है पैन ऑप्टिक विजन राइट पेनोरोमा पेनोरोमिक व्यू पेनोरामा जब तुम क्लिक करते हो फोटो तो उसमें आ जाता है ना पेनोरोमा पेनोरोमिक व्यू वो समझो तुम सो पैन वर्ड हो गया दैट वाज अ 12th वन आई सपोज हिंज हिंज जॉइंट्स हम कर चुके हैं इंसेंटिव्स यू कैन अंडरस्टैंड एंटीडोट्स में एंटी वर्ड आ जाता है दैट इज अगेन वन प्रीफिक्स सो 13 हुआ myriad word we understood already imperatives also something that is necessary to be done and introduced why did I write it because of the prefix intro एक सेकेंड उसमें है वर्ड ड्यूस ड्यूस या डक्ट करो DUCT ठीक है तो डक्ट का मीनिंग दैट इज द रूट वर्ड तो डक्ट का मीनिंग होता है पाथ रास्ता ठीक है इंट्रोडक्शन हो सकता है तो तुम्हारा रास्ता खुद को इंट्रोड्यूस करा लेते हो तुम तो रास्ता बन जाता है और एयर डक्ट्स होते हैं ठीक है कंडक्टर होता है कंडक्टर चाहे बस का हो या ऑर्केस्ट्रा का हो कंडक्शन ऑफ हीट होता है it lets the heat pass through no bad conductors good conductors of heat and electricity in that way you can understand this so that is all for today and this is the last editorial discussed in this month so kindly go through it and we'll see what we can do in our next month so that's all for today and have a very logical day ahead thank you